पीपल को अपना मानता है, बाकी जो अदर होते हैं उसको अपना ठीक है. So basically cultural diversity है, बहुत सारे religions and it's very difficult to survive with all of these all together, है ना. So communalism is when you are actually thinking about yourself, about your community, about your religion. ठीक है. So communalism basically होता क्यों है? या तो इसका reason होता है political power, you want to have votes from your side and you are differences, you are creating differences. ठीक है. तो फिर दूसरा reason क्या होगा? Economy, you want development of your community. ठीक है. अब ब्रिटिश ने भी कुछ ऐसे ही किया था, बट वाज द टर्म दे यूज्ड फॉर इट? डिवाइड एंड रूल. यस. व्हाट डिड दे डू? सुपीरियर बनाया उन्हें पहले. ठीक है. इंडिया और पाकिस्तान का कहीं ना कहीं डिवीजन इसी बेसिस पे है, कम्युनलिज्म के बेसिस पे. कैन इट बी सीन टुडे एज वेल? गिव मी वन एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल. And I'm expecting that from you because बहुत अभी recent हुआ है. Okay. हिंदू मुस्लिम का कोई अभी राइट हुआ है? हाँ. पॉलिटिकल कुछ नहीं बोलना. मतलब अभी आरएसएस का मेंशन है कि पहले में जो उन्होंने किया था, अभी रिसेंटली तुम्हें ऐसे कुछ लिखना नहीं है. ओके. हाँ. अभी रिसेंटली लड़ाई हुई थी हिंदू मुस्लिम की. इट वाज अ बिग इशू बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. रिसेंटली इट हैपेंड. हाँ. अभी हुआ था, याद है? रिसेंटली 2 महीने पहले नहीं, साल भर पहले. क्या हुआ था? हाँ. मैम संभल केस. यस, संभल केस हो. और पुराने कौन से? मैम देयर इज राम मंदिर का भी केस डिस्प्यूट आल्सो. वक्फ बोर्ड डिस्प्यूट. वक्फ बोर्ड का भी है. यस. राइट डाउन. हाँ, ये सारे केसेस किस में आएंगे? राइट डाउन. चलो एग्जांपल से रिवाइज लो. कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म क्या होता है? तो कम्युनलिज्म इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज, राइट. और कम्युनिज्म इज दैट यू आर डाइवर्टिंग ऑल ऑफ इट विद द रिलीजन. कम्युनलिज्म में रिलीजन की तरफ है, बट कम्युनिज्म में पूरा पॉलिटिकल तुम्हारा गेम है. ठीक है. पूरा मतलब वोट बैंक्स की तरफ है. एंड कम्युनलिज्म इज समथिंग दैट यू आर यूजिंग एज अ टूल, जहाँ पे हम रिलीजन यूज कर रहे हैं एज अ टूल, जहाँ पे हम कम्युनिटी यूज कर रहे हैं. बेसिकली यू आर डिवाइडिंग द कम्युनिटीज इन. अंडरस्टूड? राइट डाउन. Communalism arises when people start identifying themselves only with their own religion, start identifying themselves only with their own religion and begin seeing followers of other religions as enemies. Own religion and begin seeing followers of their religions as enemies. Other religion as enemies. So why do we need religion in the society? Religion with their own religion and begin seeing followers of other religion as enemies. Why do we need religion in the society? In the society, bonding के लिए, okay, peace, morality, values, इन सब चीजों के लिए. Yes. So now if imagine if this tool which is used, you know, to have morality in us, to have peace in us, so that we don't create chaos in the society, is used as a tool
to create violence, then how big is it in the society? Why do we need religion in the society? Understood? Write down. Communal forces misuses it as communal forces misuse it as a political weapon to divide society for power and votes. As a political weapon to divide society for power and votes. So now imagine there is a village, and in that village there are different communities and religion living all together. Like they are celebrating Diwali together, they are celebrating Eid, every festival together. Now someone from outside comes and tell कि तुम ये क्यों साथ में celebrate कर रहे हो? You should think about your community, about their welfare, right? So they started doing it. फिर उसके बाद गांव में आग लग जाती है. Then people, without thinking anything, they started helping each other. One of the elders says कि आग ने नहीं देखा कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है या फिर क्या है. So communalism is the fire. ठीक है? तो this is the moral of the story कि अगर कुछ इंडिया में COVID-19 एग्जाम्पल, राइट, कुछ भी अगर ऐसा स्प्रेड होता है तो वी शुड नॉट थिंक कि हमारी कम्युनिटी क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हाउ वी आर डिवाइडेड, व्हाई वी आर डिफरेंट. सो ऑल दीज क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड. अंडरस्टूड? ओके. नाउ नेक्स्ट, कम्युनलिज्म वर्सेस रिलीजन. So in communalism, religion is one of the tool that is used to divide people, right? So define religion first. A religious organization works to promote faith, morality, and spirituality. Faith, morality, and spirituality. Their focus is on spreading values. Their focus is on spreading values of peace, compassion, and service. Focus is on spreading values of peace, compassion, and service. Next line. A communal organization, on the other hand, uses religion as a tool. On the other hand, uses religion as a tool for division and hatred. As a tool for division and hatred. Hatred. Write examples of it. Examples of religion and communalism. Current affairs. In 2023-2024, several districts across states like Haryana, Delhi, and Uttar Pradesh saw communal tension. Okay. In 2023-2024, several districts across states like Haryana, Delhi, and Uttar Pradesh saw communal tension. सबसे ज्यादा किस स्टेट में देखने को मिलता है communal tension? उत्तर प्रदेश. Communal tension during festivals, when group tried to assert dominance in public spaces. When groups try to assert dominance in public spaces. Can we keep one class for something that I'm coming up with? So I'm thinking कि जो हमने भी पढ़ा है फैमिली वाला, ठीक है, I like pick 2 to 3 students and they explain each and every term to us. Like give proper presentation with their notes, not with the PPT that you have to make PPT and go with that.
So can we do it? नहीं, ये तो मेरे एक्स्ट्रा है, मैं तो नोट्स लिखवा के जाना चाहती हूँ. आज नहीं, we'll get like time to prepare it. Do you guys want it? It's extra, like for you. हाँ, मतलब you have to like explain to the class with your notes. Like I don't want to put extra efforts कि PPT बनाओ और फिर उसके बाद सारी चीजें. With your notes, can you do it? Do you want to do it? Prepare सब करेंगे, pick मैं करूँगी. करे रख ले किसी दिन, ठीक है. आज क्या है? Thursday. On Monday we'll do it. हाँ, पूरा फैमिली वाला इंडियन सोसाइटी से मतलब जितना भी करा है हमने, ठीक है. हाँ, सारा ठीक है. You'll have revision और जिसको नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ भी लेगा, ठीक है. ठीक है, पीपीटी अपलोड करवा दूंगा. नेक्स्ट, debates around, next example, debates around issues like uniform civil code, debates around issues like uniform civil code UCC, uniform civil code, and places of worship disputes, and places of worship disputes around issues like uniform civil code, around issues like uniform civil code UCC, and places of worship disputes have also been used. Disputes have also been used politically. Have also been used. Places of worship disputes have also been used politically. What's your name? Also been used politically. Sometimes creating polarization among citizens. Dividing in two. Huh? Debates around issues like uniform civil code UCC. Understood? Definition समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है इन पॉइंटर्स में? रीड कर लो एक बार. So far this is what we have covered. नहीं दिख रहा? ठीक है, दूसरा बना देंगे. Dividing in two. Done. Now write definition of communalism. What exactly it is. Introduction. Communalism usually means conflicts or tension between people of different religion. Tension between people of different religion. इन सब बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. ऑब्वियसली जब भी कोई डिवीजन शुरू होता है, छोटी कम्युनिटी से शुरू होता है, पहले ग्राउंड से शुरू होता है, उसके बाद स्टार्टेड स्प्रेडिंग. पहले कम्युनिटीज में होगा,
फिर उसके बाद ऊपर में होगा, फिर उसके बाद रिलीजन में स्प्रेड होगा, फिर स्टेट वाइज स्प्रेड होगा. दिस इज हाउ इट इज इन इंडिया, राइट? रिलीजन तक, रिलीजन से स्टेट तक, स्टेट से लेके फिर उसके बाद. What was the last one? Different religions. Then right, it results in violence and mistrust, violence and mistrust between groups. And it's not only about violence, it also how the ground reality is. Suppose we deny people giving them jobs on the basis of their caste, on the basis of their religion, right? तो ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? ग्राउंड बेसिस से शुरू होता है. यस, स्कूल्स में एडमिशन नहीं देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम होती है, राइट? वी डू डिफरेंसेस इन आवर डेली लाइफ्स आल्सो कि यहाँ खाना नहीं खाएंगे, वहाँ खाना नहीं खाएंगे, राइट? So next, write down. Communalism is often called political trade in religion. Political trade in religion. क्या है political trade? How is it political trade? हाँ, majority, ठीक है, okay. Next, write down current affairs. During elections, some political speeches have targeted particular religious communities to gain votes. Particular religious communities to gain what? Particular religious communities to gain votes. So basically it could be understood that it's misuse of religion, right, for political gain, ठीक है, या फिर economic gain. Understood? पढ़ लो इसे एक बार. किसने दिया मुझे पेपर? हाँ. आपके कहाँ? दो. आज सारे चेक करके कल दे दूंगी. Who? I'll check it and give it to you tomorrow. Okay, then we have elements of communalism. क्या क्या elements होंगे? क्यों नहीं होना चाहिए? Differences तो अभी हैं. क्यों? Generation. अच्छा. हाँ. Also, like the way we are moving towards materialism, ठीक है? हमारे अंदर जो selfishness, which is called solipsism, so self-centered we are that we are only thinking about ourselves. ठीक है? About us, me, I. ठीक है? So पहले still people used to think about community, about groupism, right? Our elders, they think about like villages, they thought about their culture, about their religion. हम सोचते हैं. So isn't it something negative? दोनों perspectives हैं उसके, positive and negative. But in this society we are so self-centered कि जब कोविड नहीं आया था तब realize हुआ कि groupism क्या होता है, how family is important, what relations are. But उससे पहले we were so self-centered, हमें इस आइडिया का पता ही नहीं था.
कहीं ना कहीं वो गैप आ रहा था बीच में, रिलेशंस के बीच में, राइट? So how will you see it? Okay, ठीक है. तो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? हाउ इट लाइक स्प्रेड्स. पहली पोजीशन ये होगी. स्पेशली ऑन ट्विटर एंड समथिंग. हम्म. मीम स्प्रेड हुए थे कितना. नहीं, इट वाज सो इनह्यूमन. Like yes, few things were funny about them, but उसके बाद जो inhuman, like it was so inhuman कि it was such a sensitive thing. Memes बनाए जा रहे थे, ठीक है. So there is mild communalism. Mild communalism में कि ऐसा होता है कि believe कर दिया जाता है, like it's the softest. Hated नहीं होता इस mild communalism में, but thing is ऐसा परसेप्शन बना लिया जाता है कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, हिंदू या मुस्लिम, वो पूरी मेजोरिटी अलग अलग कुछ चाहती है, कि पूरा हिंदू समाज ही एक कुछ चाहता है, पूरा मुस्लिम समाज कुछ एक चीज चाहता है, ठीक है. ऐसी assumptions बना ली जाती है. अंडरस्टूड? लाइक व्हाट्स द assumption do you think of Muslims, Hindus, कि उन्हें यही चाहिए? Is there anything? Okay, yes, सब लोग सोचते हैं ऐसा. एंड दिस इज माइल्ड कम्युनलिज्म, कि पूरे हिंदू लोगों का यही पर्सपेक्टिव होगा, उन्हें यही चाहिए, ठीक है. एंड इट कैन बी योर बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑल्सो, कि सब हिंदू को चाहिए कि हमारा जो कम्युनिटी है वो डेवलप हो इन इकोनॉमी, वो ज्यादा एजुकेटेड रहे, ठीक है. एंड सेम गोज विद मुस्लिम. तो एक ऐसी assumption जिसमें ये बना ली जाए कि दिस इज द होल कम्युनिटी वांट, वो है माइल्ड कम्युनलिज्म. देयर इज नो हेट्रेड टुवर्ड्स अदर, बस वी आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है. नाउ राइट डाउन फर्स्ट एंड सॉफ्टेस्ट स्टेज. और ये यूज भी किया जाता है. कैसे यूज किया जाता है? वोट बैंक्स के थ्रू. You have seen those people who are electing themselves, they are coming with certain schemes, ठीक है. वो schemes on the basis of community they are arising. कुछ schemes होंगी जो सिर्फ हिंदू के लिए होंगी, कुछ वो schemes होंगी जो सिर्फ मुस्लिम के लिए होंगी. So this is mild communalism, assumption which thinks that whole community want one thing. Understood? First and softest stage, then rise. हाँ, the people believe that everyone following the same religion, that everyone following the same religion automatically shares common social. Bhavya, Anjali, Shalini, Sukriti, all online students, I hope you are writing. Yes, ma'am. Okay. Shares common social, political and cultural interest. At this stage, there is no direct hatred. At this stage, there is no direct hatred towards other, but it still creates divisions. Direct hatred towards other, but it still creates divisions. Next is moderate communalism. Moderate क्या है? So basically, moderate is thinking that one religion wants something different with other religion. ठीक है. अगर किसी हिंदू को कोई एक चीज चाहिए, तो this is the like assumption that the other religion will want exactly like different, proper different thing. Other than that, कुछ example है आपके पास इस चीज का?
हाँ ओके, बट ऐसा कोई एग्जाम्पल वेर यू कैन एक्सप्लेन कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट मांगता है, लाइक आइडियोलॉजी इज लाइक टोटली डिफरेंट. Okay. Yes, good. Very good. Perfect. Write down. Hmm. Yes, write down. So what it creates the ideology us versus them, right? The differences is created in two. समझ में आया? So write down. This stage goes deeper. This stage goes deeper. In a country like India, in a country like India, where people of many religion live together, where people of religion live together. Religion live together. So moderate communalism assumes that secular interest of one religion, secular interest of one religion are different. Secular interest of one religion are different from those of another. Religions are different from those of another. So there is one example, write down, a very important one. Demands for separate electorates during the colonial period where Hindus and Muslims voted separately. So during the colonial time, it was seen like obviously the British did it. They actually created so much difference कि उन्हें बिलीव करा दिया गया कि मुस्लिम और हिंदू के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं एंड दोज इंटरेस्ट कैन नेवर गो टुगेदर. ठीक है? Where Hindus and Muslims voted separately, reflected this stage as it assumed that the interest of both groups could never be represented together. Separately reflected, this is in bracket, where se leke separately tak it's in bracket. Reflected this stage as it assumed that the interest of both groups could never be represented together. Then we have extreme communalism. So basically, extreme communalism is much vast and much like towards the hatred. Yes, towards the violence. So basically, अगर किसी community का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो we are against that. Jealousy phase आता है इसमें, ठीक है. Write down. Most dangerous stage. Another point. Completely opposite and hostile. Another line. One's group's gain is another's loss. Completely opposite and hostile. Another line. One group's gain is another's loss. Like in this extreme stage, example दे दो बहुत बड़ा सा expected example. Okay. इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन था was this like this stage, extreme stage? क्यों?
हाँ, तो दिस इज एक्सट्रीम, वायलेंस भी है इसमें एंड इट्स लाइक अ प्रॉपर डिवीजन. ठीक है, इतना हेट्रेड कि अगर किसी कम्युनिटी का गेन हो रहा है तो वी फील दैट इट्स लॉस टू आवरसेल्फ. ठीक है, तीनों स्टेज समझ में आ गई. कौन एक्सप्लेन करेगा? यू एक्सप्लेन माइल्ड स्टेज. सभी लोग उन्हीं के रिलीजन को फॉलो. और कुछ? और कुछ मॉडरेट कौन बताएगा? नहीं, मॉडरेट क्या करते हैं? ओके, ठीक है. और कोई? ओके, और एक्सट्रीम? किसने बोला? क्या? ऐसे लिखोगे तुम लोग पेपर पे? वो पैराग्राफ सुनाओ ना. ठीक है, आया समझ में? तीनों इजी है, आंसर फ्रेम कर लोगे? रीड करना है? हो गया. ओके, नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म. एक्सट्रीम का? अच्छा, हाँ. The partition of India in 1947 in India, the partition of India in 1947 was the most, in 1947 was the most extreme, form of communalism, where Hindus, Muslim, where Hindus, Muslim, and Sikhs were seen as mutually hostile. At this point, communities start believing that one group's gain is another's loss. Believe in that one group's gain is another's loss. Okay, now there are features of communalism. First feature is based on orthodoxy and intolerance. What is orthodox? रूढ़िवादी तो थोड़ा सा like some general definition of it. Rigid, okay. So orthodox is some principles and some rules and regulations which are followed in everywhere, right, and which are not changed. So write down. So it depends on rigid. It is who? Communalism depends on rigid. Communalism depends on rigid orthodox thinking. क्या होता है इसमें? That people start thinking that their religion is the only religion which is talking about peace, which should be developed, है ना? So write down. People refuse to accept diversity.
or multiple ways of living. Right example? Multiple ways of living. Recent debates over, example, recent debates over food habits. किस किस फूड पे ज्यादा डिबेट होती है? Beef. Write down. Habits often show how rigid religious often show how food habits often show how rigid religious interpretations how rigid religious interpretations are imposed on everyone, ignoring diversity. Are imposed on everyone, ignoring diversity. Then second feature is propagates intense dislike of other religions. Propagates intense dislike of other religions. So basically dislike like that they are against us. The other community is against our development. That other community is thinking against us. So all these thinking, all these ideologies leads towards diversity, hatred, right? For example, इसमें फेक न्यूज चला देना, ठीक है, लड़ाई करवा देना, रूमर्स फैला देना, राइट? सो राइट डाउन. Communalism thrives by creating suspicion and hatred against followers of other religions. Hatred against followers of other religions. Right example of it. Social media in India has become a major tool where fake videos or posts are circulated to fuel hatred between communities, especially during elections. Fake videos or posts are circulated to fuel hatred between communities, especially during elections. How you guys are preparing? मैं कितने घंटे पढ़ते हो तुम लोग? 7-8. क्या पढ़ते हो? You've done your graduation, right? सबने graduation कर ली? सबने? आपकी नहीं हुई है? You are in first year, second, third, second. कैसे पढ़ रहे हो आप? कितना घंटा पढ़ते हो? जिसमें कि क्या पढ़ते हो? क्लास का रिवाइज करते हो जाके? आप सेम? क्या कैसे प्रिपेयर, क्या स्ट्रेटेजी है? ठीक है, आपका 2 और 3 क्या कंप्लीट कर रहे हो?
कितना घंटा पढ़ रहे हो? सेम। यू? तुम्हें लग रहा है 2-3 घंटे इनफ है? पता है, डोंट टेक इट रॉन्ग, बट तुम से मुझे कोई सीरियस लगता नहीं है। मतलब 2-3 घंटे तो यू गाइस हैव सेड इट कि जैसे कि 12-13 घंटे पढ़ लेता हूँ मैं। पता है तुम्हें कहाँ जाता है? All I'm saying is कि किसी ने फोर्स नहीं किया आप लोगों के एग्जाम देने के लिए, यू चोज इट योरसेल्फ, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू आर पुशिंग योरसेल्फ। कोई फायदा नहीं है, कोई पीछे खड़ा नहीं होगा आपके। मैं भी 20 क्लासेस एक्स्ट्रा लेके चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ, रहेंगे। वैसे तो मैं रहूंगी, बट थिंग इज कि मैं कितना ही पुश करूंगी आप लोगों को। कितना बोलता है ये, प्लीज मत करो। मतलब 2-3 घंटे कुछ भी नहीं है। 2-3 घंटे तो इट शुड बी लाइक रिवीजन ऑफ योर व्हाट यू हैव लर्नड इन द क्लासेस। पहले एनसीईआरटी से शुरू करो। हाँ, 11th-12th की, हाँ लाइक पूरा उसको अच्छे से निचोड़ दो। हाँ, उसमें से पढ़ना शुरू करो, ठीक है? टेकिंग आउट नोट्स फ्रॉम दैट। कुछ प्रॉब्लम होती है, कम टू मी, ठीक है? कुछ आंसर की फॉर्मेशन चाहिए, आस्क मी कि मैम ये वाला आंसर फॉर्मेट करके दिखा दो, मैम इसमें क्या डाल सकते हैं। आई हैव नॉट सीन लाइक 1 or 2 स्टूडेंट केम टू मी, बट उसके अलावा नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। मतलब तुम लोग सीरियस ले ही नहीं रहे हो इस पेपर को। पीपीटी और नोट्स में मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने बाहर से लिखवाया हो, मतलब एक्स्ट्रा ही है सब कुछ, ठीक है? की टर्म्स भी, कीवर्ड्स भी, लाइनर्स भी, एग्जांपल्स भी रिसेंट है, ठीक है? बट इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी दैट्स लाइक अ प्लस पॉइंट ऑफ योर्स। अगर आंसर बनाने में इफ यू आर गुड, कहानी ही बनानी है, बट थिंग इज दैट यू हैव टू यूज वैलिड कीवर्ड्स, ठीक है? विद गुड करंट अफेयर्स, मेंटेनिंग द प्रेजेंटेशन, मेंटेनिंग द हैंडराइटिंग, मेंटेनिंग द गैप। अब वो चीज होगी प्रैक्टिस के साथ, विच आई हैवंट सीन एनी वन ऑफ यू। बहुत कम वेटेज है इसका। हाँ, बट इफ यू आर रीडिंग मोर इजंट दैट अ गुड थिंग? मतलब पहले एनसीईआरटी से शुरू करो, व्हेन यू विल बी डन विद एनसीईआरटी, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट राइटिंग साइड बाय साइड। जो भी आप चीज कर रहे हो स्टार्ट राइटिंग। जितना लिखोगे, जितना माइंड में आंसर फॉर्मेशन आएगी, थिंग इज दैट वी अंडरस्टैंड, कंसेप्ट समझ में आता है, बट द प्रॉब्लम इज फॉर्मिंग द आंसर, राइटिंग द कंसेप्ट्स, राइटिंग इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, कमिंग अप विद द कीवर्ड्स, रिमेंबरिंग देम। इन सब चीजों में प्रॉब्लम होती है। अब वो चीज सोल्व भी तब होगी व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग। 2-3 घंटे तो तुम लोगों ने ऐसे बोल दिए जैसे 12-13 घंटे पढ़ के एहसान करा हो तुमने। People in other classes are like studying for 12 to 13 hours. नहीं, I've seen them personally. UPS. मेरे पहले वाले बैचेस में you were not there and you are not linked to them. Don't make the difference. Communalism पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। कैसे मतलब? क्या मैनेज नहीं हो रहा है? दो रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 क्यों बजेंगे? तो दिन के 2 बज जाते हैं। अच्छा फिर तुम सो जाते ना। और पता है इतना स्कोरिंग पेपर, इतना इजी पेपर है, इसीलिए मुझे तुम लोगों पर थोड़ा सा बुरा लगता है कि तुम लोग इसे इनफ टाइम दे ही नहीं रहे हो। दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, इसे तो सबसे पहले लिंक करना चाहिए तुम्हें।
History, what society has to do with history? Okay. Who are reading current affairs? इसी सोसाइटी में रहते हो, इंडिया में ही रहते हो. These are the current affairs that you have to cover. कुछ ऐसा बाहर का मिल जाएगा करंट अफेयर्स में that you won't be able to link. कुछ भी एक करंट अफेयर ऐसा पढ़ लोगे आप, बाकी सब्जेक्ट्स में भी करंट अफेयर्स चाहिए, तो फिर इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बट यू आर नॉट डूइंग दिस ऑल्सो. सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट जीरो. क्यों नहीं हो पा रहा? मैं टाइम टेबल बना कर दूं नोट्स के साथ साथ. कितने बजे सोते हो आप? कम टू मी आफ्टर द क्लास. और किसी को भी प्रॉब्लम है इस चीज में, टाइम मैनेजमेंट में? सबको ही है क्या? करंट अफेयर्स किसी के हैं? नहीं है. ठीक है. आंसर राइटिंग तुम किस में कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग कर रहे हो? चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट लिंक विद द इंडियन सोसाइटी बिकॉज देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तुम्हारा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है. बट आंसर राइटिंग और किस सब्जेक्ट में कर रहे हो तुम लोग? एनवायरमेंट और सोशियोलॉजी जो इंडियन सोसाइटी हम कर रहे हैं, इज दैट डिफरेंट? पूरा डिफरेंट है. कैन यू नॉट लिंक द एनवायरमेंट? जो तुम एनवायरमेंट में पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी आ गया, थोड़ा सा साइंस आ गया, बट इज देयर समथिंग व्हिच यू कैन नॉट लिंक विद इट? ये तो इंडियन सोसाइटी सबसे ज्यादा इजी है. एनवायरमेंट को तुम इजी ले रहे हो, इंडियन सोसाइटी को नहीं ले रहे हो. अच्छा ठीक है. एनवायरमेंट में यू आर फॉर्मिंग आंसर्स. एक सेकेंड, अच्छे से आंसर्स फॉर्म हो रहे हैं उसके एनवायरमेंट के. यू आर पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स इन दैट. अभी हम आंसर ऐसे लिख नहीं रहे, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, अलग-अलग उसके बाद मैनेजमेंट ही है सर. Talking about my subject, coming back there. 10 बजे से पहले नहीं जाऊंगी सर मैं आज. ठीक है फिर मैं भी खा लूँ. प्रॉब्लम क्या है? किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है? मेरे सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है? ओके. Whatever I am teaching you in the class, are you understanding it? हर concept कीवर्ड समझ में आ रहा है? Is there anything that you didn't understand? प्रॉब्लम आंसर फ्रेमिंग में आ रही है? आएगी ही क्योंकि आप आंसर लिख नहीं रहे हो. हाँ. याद करना क्यों है? Like you have to build stories in it. हाँ exactly. Start reading NCERT first. आज से ही start reading NCERT. ठीक है. एक काम करो, 6 से लेके 12 तक शुरू करो. You'll get like one proper PDF of it. Online मिल जाएगी ऐसी बहुत सारी. ठीक है. And start reading NCERT. सोशियो की एक पर्टिकुलर बुक होती है फॉर सिविल सर्विसेज एंड ऑल ऑफ दोस सब्जेक्ट्स जिसमें एनसीईआरटी कवर होती है. यू विल गेट वन पीडीएफ ऑनलाइन में, डाउनलोड इट एंड स्टार्ट रीडिंग इट.
और क्या प्रॉब्लम्स है हमारे घरेलू नुस्खे बताओ। हाँ, मैं क्या पढ़ाती हूँ? मैं और एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, इको। हाँ, फिलोसफी पढ़नी है, फिलोसफी। हाँ, फिलोसफी पढ़ने में, हाँ, इट्स फन, इट्स वेरी फन। फन चाहिए लाइफ में। है इंटरेस्ट फिलोसफी में? हाँ, अच्छा, इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न में और ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या नहीं चेंज होता? वेस्टर्न फिलोसफी इज नॉट टू चेंज योर पीओवी, इंडियन फिलोसफी इज। इंडियन में तो ऐसे तो आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, वो तो बदलेगा ही नहीं अगर खुद बदलना नहीं चाहते। राइट डाउन। बहुत प्रॉब्लम्स है तुम लोगों की लाइफ में, और वो प्रॉब्लम सारी पढ़ाई से शुरू है। हाँ, नहीं, सारे बैचेस मेरे बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ओके, वेयर वर वी? हाँ, social media in India has become, देखिए, okay, stands for elimination of other religion and their values. हाँ, stands for elimination of other religions and their values. So basically, elimination of other religion, this is extreme. Basically, you are eliminating them. You are not even thinking about their existence, कि वो exist भी करता है religion. ठीक है, इस extreme तक जाना is what elimination. कहाँ पे हुआ था? Indian society. हाँ, yes, okay, yes, perfect, good. Write down. It moved towards rejecting. It moved towards. Thing is that you know कि answer frame कैसे करना है. You are just not getting the words. So make sure that you are writing more and more. Please do it. It moved towards rejecting or even eliminating the existence of other religions, or eliminating the existence of other religion. Write down. Adopt extremist tactics including violence. इसे अपने वर्ड्स में लिख के बताओ in 3 to 4 लाइन्स। बता देती क्या है। बेसिकली वायलेंस की तरफ जब जाता है कम्युनलिज्म, टैक्टिक्स इंक्लूडिंग वायलेंस, तो बेसिकली जब अग्रेशन वायलेंस क्रिएट होता है कम्युनलिज्म से, ठीक है, वो पॉइंटर्स मेंशन करने हैं इसमें विद एग्जांपल्स। राइट अबाउट 3 to 4 लाइन्स। मुझे नहीं पता क्या लिखोगे, बट इसको एक्सपेंड करो, बहुत इजी है इस पॉइंट को। वायलेंस जो हो रहा है, मोब लिंचिंग वगैरह जो होती है, जो रायट्स होते हैं, वो सारी चीजें यू हैव टू मेंशन इन दिस पॉइंटर कि किस बेसिस पे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या टेंशन क्रिएट होती है। अपने वर्ड्स में लिखो इसको। क्या लिखा हुआ है क्या मैंने? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो। मत डालो। नहीं, we cannot explain that. I agree with that point. नहीं, we cannot explain that because thing is it's debatable still कि वो religion basis पे था, like terrorism is based on religion or not. It's very extreme, very sensitive topic, so don't write it.
2020 में भी लड़ाई हुई थी ना दिल्ली में, दिल्ली राइट्स हुए थे बहुत एक्सट्रीम थे, तो वो मेंशन कर दो। तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नहीं फ्रेमिंग आता है, मैं यही बैठी होती है फैकल्टी रूम में, किसी से बोल दिया करो कि शिवानी मैम से मिलवा दो, आ जाया करो आंसर्स लिख के, जितना ज्यादा किसी से पूछ लिया करो एडमिन टीम से कि शिवानी मैम को बोल दो। नहीं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा क्लियर पेपर सब। ट्रस्ट योरसेल्फ, प्लीज मैनेज योर टाइम एंड स्टार्ट राइटिंग। इतना टाइम नहीं है 4 लाइनों के लिए बिल्कुल भी। व्हाट डिड यू राइट? लाउड। रीड इट आउट एंड देन टेल व्हाटएवर यू हैव रिटन, अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखा है, एक एक वर्ड। एक मिनट, दोबारा। नहीं नहीं, दोबारा। ओके ठीक है, तो एग्जांपल हो गया, बट यू डिडंट एक्सप्लेन दिस पॉइंट। एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या कम्युनलिज्म कैसे लीड होता है। कम्युनलिज्म में वायलेंस कैसे आया, क्यों आया, रिलेटेड टू दैट। रीड इट आउट। हम्म हम्म। Aren't these examples also? You haven't explained how communalism is leading violence. Like explain that how communalism often relies on these things. Done? Mm-hmm. Why you are like writing in short forms? WhatsApp message nahi hai ye. Write down that communalism relies on these certain aspects. These are the tools. Dobara. Point wise nahi. Write in the para. If I said that write 3 to 4 lines, write in the paras. To read karo. Based on the preconceived notion that they are opposing a religious practice through the use of fake news or other sources that feed their hatred, like hate speeches or fake news, example telling that therefore Taylor brother or where is the violence in it? Mob lynching. Example दोबारा पढ़ना वो वाली लाइन, mob lynching वाली aggravated assault to carry life. दोबारा पढ़। The rampant use of aggravated assault on the person of different religions based on the preconceived notion that they are opposing a religious practice through the sources that fuel their hatred towards them through fake news or hate speeches. Example, Delhi Riots 2020. Therefore, Taylor murder and mob lynching in several states. Good. It's very nice. मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कम्युनलिज्म को कि लाइक whenever you are writing the answers, the pointers, don't expect from the answer checker कि हाँ वो समझ जाएगा किसी का pointer है. Like started from that communalism relies on these certain things. ठीक है, this is how your presentation should be. This is the presentation I was talking about. But yes, whatever examples you took and how you wrote it, it's very nice. एक सेकेंड, डिड यू सबमिट मी योर आंसर? कब दिया? अभी दिया ना?
तेज, कमर सीधी. When the hatred towards conservative communities gets so high that they think their existence is only possible after wiping out of that community, such hatred would lead to genocide and mass killing. एग्जाम्पल Kashmir Punjab, और एक और लिखो. Blue Gold, Bhara Train Working. लिख दो. Communalism creates a us versus them mindset, Mhm. which not only creates a sense of Superiority, towards one's own religion, but it also causes intense tensions and riots in the country, adopting extremist tactics including violence. For example, the 1982 anti-Sikh riot and the Delhi riot 2020. Good, very good. Riots and mob violence uses communism, which creates fear in people, and they tend to go for maintaining control over one another. Second one, hate speeches instills violence based on communism between different religions. It is the survival of us versus them used in different communities, thus using attacks using weapons and other violence threats are used. Example, during Ram Mandir case, violence and riots happened between Hindu and Muslim. Thus, use of extreme violence tactics and weapons were used. Second example, partition of India into two states, India and Pakistan, led to mass riots, leading to atrocities and mass death. ठीक है, perfect. और किसी को सुनाना है? Write down exclusive outlook, superiority of one's religion, superiority in one's religion.